Now we have deduced the equation of motion by the calculus method. Then first equation of motion, first equation of motion or velocity time relation. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या फाइंड करनी है बाय द कैलकुलस मेथड. देन वी नो दैट acceleration a is equal to dv upon dt. Now cross multiplication, then dv is equal to a into dt. Now integration of both sides. Now इंटीग्रेशन करेंगे हम बोथ साइड का विद द लिमिट. देन when the time t is equal to 0, then initial velocity is u, and time t is equal to t, then final velocity is v. So that वेलोसिटी की जो लिमिट है वो हो जाएगी आपकी u2 v dv इज इक्वल टू टाइम की लिमिट 0 to t a into dt. This is the u into v dv is equal to a 0 to t dt. इसका इंटीग्रेशन आपका v हो जाएगा u2 v is equal to a t 0 to t. Now put the limit v minus u is equal to a into t minus 0 और v minus u is equal to a into t या फिर v is equal to u plus at. This is the first equation of motion by the calculus method. Now second equation of motion or displacement time relation. We are finding the displacement time relation by the calculus method. As we know that velocity is equal to ds upon dt. Now cross multiplication, then ds is equal to v into dt. Now put the value of v is equal to u plus at from first equation of motion. We are putting the value of v from first equation of motion, then we get u plus at into dt. Now integration of both sides with limit 0 to s ds 0 to t u plus at into dt. The integration of ds is s 0 to s, and this is the u into t plus half a t square and limit 0 to t. Now put the limits, then s minus 0 is equal to ut plus half at square minus 0 minus 0. Then s is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion. We are using the formula for the integration is x to the power n dx is equal to x की पावर n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है u है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो u इंटू डी टी मान सकते हैं. तो यहाँ पे आपका t का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम क्या u आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा.
और यहाँ पे हम मान लेते हैं टी टू द पावर 0 इंटू डी टी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u टी की पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1। तो इस हिसाब से इसका जो इंटीग्रेशन है u इंटू टी आ जाएगा। सिमिलरली a t का इंटीग्रेशन ऑफ a t इंटू डी टी। तो a इज द कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t and t into dt. Now integration of t is t to the power 1 plus 1/1 plus 1. तो ये हो जाएगा आपका a t to the power 2/2. This is the integration of a t. तो वही हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लिखा है। तो ये आ जाएगा आपका ut plus half a t square. Now third equation of motion or displacement velocity relation. We know that acceleration a is equal to dv upon dt. Now we can write this dv upon ds and ds upon dt. Then acceleration a is equal to dv upon ds into ds upon dt is equal to velocity, then a into ds क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, then v into dv. Now integration of both sides with limit, then limit हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट 0 to s a into ds is equal to u2 v into dv. Now integration is s 0 to s limit is equal to v square upon 2 u2v limit हो जाएगी, then a s minus 0 is equal to v square minus u square upon 2, then a s minus 0 is equal to v square minus u square upon 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2as is equal to v square minus u square, v square is equal to u square plus 2as. This is the third equation of motion by the calculus method.